बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू सो मच. ईरान इस वक्त जो है वी ऑल नो इज़ इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन. लेकिन आप देखिए कि अभी राहबर द इंस्टीट्यूशन ऑफ राहबर ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. उनको टारगेट किया गया और पहले से बताया जा रहा था कि उसको टारगेट करेंगे. लेकिन जो ईरानियन रेवोल्यूशन जब आई 79 में, तो उस वक्त इमाम खुमैनी was basically seen to be the leader. फिर he died within 10 years, I think August 89 or July 89. July 89 में he died. तो उस वक्त ये जो खामेनाई थे, he was not of a level. Even आयतुल्ला खुमैनी जो थे वो भी, मैं लास्ट टाइम भी जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी, to understand Iran we have to understand that there are two channels of leadership in Iran. One is theological and the other is political theological. जो political theological हैं वो they are not of the level जो कि actual theological हैं. So जब revolution आई तो they had converged their views कि जो theological हैं उनके काम में political दखल अंदाजी नहीं करेंगे और जो political हैं उनके काम में theological interfere नहीं करेंगे. Having said that, in implementation there were several occasions where the roads crossed, and when it crossed it was bad. It exposed the fault lines within the Iranian system. उस वक्त फिर जब खामेनाई आए तो he was an institution builder. He thought कि ये इधर अगर इनकलाब को सस्टेन करना है, दायम करना है, तो इंस्टीट्यूशंस को भी दायम करना है. So institution of wali faqih came up. Wali faqih is the wali who interprets religion in modern terms. Or when we were there, a lot of absurdities were taking place because how could wali faqih take ancient time explanations to solve modern day problems. तो उसमें काफ़ी मजाक खर्च चीज़ें भी होती थी, confusion भी था, but they were trying to channel out what the role of wali faqih would be. Then अगर आप theological Shia school of thought देखें तो उनका base जो था वो नजफ. Najaf had always been the focal point. The highest of the Ayatollahs resided there. Deep down, that conflict between Arab and Ajam has always existed here. So when the Inqilab came, it was very painful for the Iranians to accept that while they are the forefront of Islamic revolution, the center of gravity is in Najaf. How to shift it from Najaf to Qum. So consequently, they brought up this institution of Rahbar. So Rahbar was the guide, the religious, the spiritual guide for the whole of Shia world. Whether you were a 12er or 11er or you were 9er, whatever you were follower of Rahbar. So how would you place Rahbar when it comes to Shia theology where Najaf was the base? So inherent lacunas were there on which Imam Khamenei worked assiduously. Every year they would hold this international conference, what they called international conference, but they invited Shias from all over the planet of different schools of thought, and they would have a debate with them, convincing them that this is the Rahbar
that we are going to follow. So Imam Khamenei, in 37 years of his being at the helm of affairs, created several institutions. One was the institution of Rahbar, then of Wali-e-Faqih, then he was also economy के head भी थे, IRGC के head थे. IRGC also, जिसा last हमारी गुफ्तगू हुई थी, that also उसकी evolution was very complicated. Who were the original IRGC people? They were basically the ragtag, forgive me for using this word, vagabonds from the streets who were fighting to protect the revolution. So they, when became entrenched, they started enjoying the power. So उनको पासदार कहने लगे. अब जब पासदार एक थे जो उनकी डिफेंस फोर्सेस थीं, जो कि हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग थीं, शाह के ज़माने में ईरानियन आर्मी वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, उनको डाउनग्रेड कर दिया गया. ज़्यादातर जनरल्स तो भाग ही गए थे जब शाह भागे, तो पीछे जो रह गए, they were looked at with suspicion. So there came a conflict between the conventional army and the IRGC. So at that time, again, Khamenei and at that time Rafsanjani decided that we should give them a proper form of a defense force, which would be as good as the formal defense force. Now, in this bifurcation, I think the Iranians thought more of working by proxies, because जिस दिन से revolution आई, Marg bar America was the slogan. So they knew, and time and again they have had confrontation with the Americans, whether it was the embassy issue or wherever. So they decided that instead of going directly into confrontation with the Americans, we should work on proxies. So they developed proxies not only in the Middle East, but also in Latin America and Central America, which for them was American backyard. So they said, if you're going to hit us from your proxies in this region, we can hit you with our proxies in that region. So it was a game of chess that Imam Khamenei and other leaders were playing to checkmate the Americans. So Americans were very upset with that because they thought it was only their right to have proxies, so they could not tolerate the Iranians being there. और ये सब के जो है, in my view, credit इमाम खामेनाई को जाता है कि उन्होंने IRGC को एक ऐसी फोर्स बनाया, फिर साथ साथ उन्होंने प्रॉक्सीज के ऊपर इन्वेस्ट किया. ईरान की जितनी इनकम थी थ्रू ऑयल एंड गैस, जो कि वो बहुत सी अनाउंस थी, बहुत ज़्यादा अनाउंस नहीं भी थी, वो अनअकाउंटेड फॉर जो है ये प्रॉक्सीज को और IRGC को जा रही थी. बट इन द प्रोसेस देयर फॉर्मल डिफेंस फोर्सेस बिकेम वीक, क्योंकि उनको सस्पिशन से देखा गया, उनको वो स्ट्रेंथ नहीं दी गई जो कि अगर दी जाती तो शायद Iranian army could have been much stronger, just as good as Pakistan army. But that didn't happen because this side development had taken place. Consequently, neither was strong enough. And we could see in the 12-day war कि जो उधर उनको weakness expose हुई कि direct confrontation में वो नहीं, वो drones पे जा सकते थे, missiles पे जा सकते थे, लेकिन foot on ground जो है, neither Iranians could do it nor the Americans could do it. But the Iranians couldn't do it because they did not invest in it. They thought कि हम proxies से और drones और missiles वगैरह से अपना काम चला लेंगे. रही बात न्यूक्लियर की, ईरान का जो पहला न्यूक्लियर प्लांट था वो अमेरिकन्स ने एस्टैब्लिश किया था तेहरान में, और उसके बाद
जब इनके प्रॉब्लम्स इरप्ट हुए, जब शाह को डिपोज किया गया, तो Americans wanted to use it as an arm twister. Then the Iranians very cleverly changed the configuration of their nuclear plant. They went to Argentina. I was in Argentina. I know that they were having deals with them. उधर से ही उन्हीं का जो है यूरेनियम इधर ला रहे थे. उनकी जो मशीनरी, जो सेंट्रीफ्यूग्स वगैरह थे, वो लाने लगे. तो उन्होंने जो अपना सिस्टम जो पहले बहुत ज़्यादा अमेरिकन डिपेंडेंट था, उसको डिसंगेज करके अपना बनाने शुरू किया. लेकिन बिकॉज इट वॉज एन इस्लामिक रेवोल्यूशन, देयर spiritual or religious view prevented them from going a nuclear weapon state. So they became signatories of NPT. They allowed NPT IAEA inspectors to come and inspect the plants regularly. I think Iran is one of the most monitored state by IAEA inspectors. So they were all right with it. Now, when the negotiations were taking place, I'm fast forwarding, so you can ask questions as we move on. जब आपके लास्ट टॉक्स हो रहे थे ओमान में, तो अमेरिकन एंड इरानियंस हैड एग्रीड. पहले तो हम JCPO की बात करें, वो ट्रम्प साहब आए, उन्होंने वो फाड़ के छोड़ दिया कि इट वाज अ बैड डील एंड वी आर गोइंग टू redefine our relationship with Iran on this. So JCPOA became sidelined. इन्होंने डायरेक्ट टॉक्स शुरू किए. ओमान में जब टॉक्स होने लगे, इजराइल अटैक्ड एंड दे डिरेल्ड द टॉक्स. अभी फिर जनीवा में टॉक्स हो रहे थे. देन अगेन इजराइल एक्शन रीप्ले. द क्वेश्चन इज व्हाई इज इजराइल डूइंग इट? एंड वी कम बैक टू द सेम आइडिया ऑफ मीगा, मेक इजराइल ग्रेट अगेन. और वो अपना जो डिफाइन कर रहे हैं वो है बिब्लिकल राइट कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को ये वादा किया था कि फ्रॉम यूफ्रेटस टू नाइल दिस इज़ योर लैंड, इट्स योर राइट, एंड दे वांट टू रिक्लेम दैट. अब उसमें बहुत सी डिबेट्स हैं विद इन जुडाइज्म ऑल्सो, बिकॉज जूइश भी जिस तरह सुन्नियों के स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, शियास के स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, क्रिश्चियंस के स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जुडाइज्म के भी हैं. देयर आर सर्टेन रेबाइज हु बिलीव कि अगर आप इस तरह की जंग व गदर और ज़िद-ओ-कोब करेंगे तो अल्लाह ताला की लानत आप पे पड़ेगी. 2 दफ़ा, एक दफ़ा हो चुकी है और अब अगली दफ़ा होने वाली है. So why are you precipitating it? There is another school of thought that says that the Jews are the chosen people. So because they are chosen, Allah Ta'ala ने उनसे कोई पूछ-गूछ करनी नहीं है. So sinning is good. They actually believe कि जितने sins आप commit करें, that is a good thing you're doing. क्योंकि उस पे अल्लाह ताला जो है आपको, you know, he is not going to do anything to you. जिस पे आप sin करेंगे उसी का मसला होगा. The point is कि गजा में जो इन्होंने तबाहकारी की, this was part of that school of thought. जो एप्स्टीन फाइल्स आप पढ़ रहे हैं, that is again part of that school of thought कि sinning is good. अब इजराइल की स्टेट पे अगर आप आ जाएं, तो इजराइल में जब बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद कौन लोग आए जो कि जिन्होंने मॉडर्न डे इजराइल बनाया? They were mainly European Jews. So जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी थी, इनकी भी वाइट इजराइल पॉलिसी थी. At this moment, Netanyahu, who is the prime minister, is white, is of Polish origin. Poland had been part of Soviet Union, so they really didn't have any religion. Netanyahu's parents had no religion. They were neither Jews nor Christians. So Netanyahu himself is not actually a genuine Jew.
और जब इन्होंने ये अब्राहमिक लॉ की बात की कि अल्लाह ताला ने किया है, द क्वेश्चन अरोज कि आप डीएनए टेस्ट कराएं. हाउ मेनी ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ मॉडर्न डे इज़राइल हैव द अब्राहमिक डीएनए? क्योंकि हज़रत इब्राहिम के दो थे बेटे, इस्माइल और इसहाक. इस्माइल से मुसलमानों की है, इसहाक से जो है वो जूस की है. The residents, the Palestinians, are as much promised by God as are the Jews. But this is an existential issue for the Jews. अगर आप इज़राइल को कहते हैं कि we recognize you as a state, that means that you deny everyone else the right to exist there. And that is a big dilemma because a lot of the countries like UAE and others recognized Israel without really pondering into the depth that recognizing Israel means not recognizing other nationalities and religions that existed in this land for millennia. So now it has become a complicated issue. कि क्या वो यूफ्रेटस से नाइल तक जाएंगे? अगर यूफ्रेटस से नाइल तक जाएंगे तो फिर आपका सीरिया, आपका लेबनान, आपका इजिप्ट, आपका जॉर्डन, आपका सऊदी अरेबिया, आपका इराक, आपका ईरान, आपका तुर्की, everything comes into it. Where do you draw the line? So अभी ये टकर कार्लसन का जो इंटरव्यू था with the American ambassador in Israel, that exposed a lot of American approach to it also. Yes, because the ambassador there is evangelical and he is basically a priest, an evangelical priest. So he goes to the evangelical church in Jerusalem and therefore believes that Jerusalem should be the capital of Israel. And the evangelicals also believe that in the New Testament also, God has promised this land to Israel, people of Israel, and they do not recognize Palestinians as the people of this land. So with this theological mindset, Israel is not going to stop. अभी आप टॉक्स पे जा रहे हैं, अभी आप गुफ्तगू कर रहे हैं. अब जब ये ईरान ने मिसाइल्स फेंकने शुरू किए, पहले तो ये मिसकैलकुलेशन थी कि एक बंदे को निकाल के दे विल चेंज द सिस्टम, रिजीम चेंज, जैसे मडूरो का वेनेजुएलन मॉडल को. ईरान इज डिफरेंट फ्रॉम वेनेजुएला, सो दैट मॉडल इज नॉट गोइंग टू वर्क इन ईरान. नंबर वन. नंबर टू, कि अगर वो इसको मज़ीद छेड़ते हैं तो हाउ फार will the whole region be affected by it? As regards Iranians, for them it's number one, existential issue. Number two, they thought कि अगर हम, क्योंकि अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, एम्बेसडर साहब से भी बात हो रही थी, and I was talking to a few friends also, कि why did Iran decide to attack the American bases in the Gulf countries instead of directly hitting Israel? ज़्यादातर इनकी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स इन्होंने यूज़ किए हैं. अभी अपने प्रॉपर जो लॉन्ग रेंज और जो उनके एक्चुअल जेवर हैं वो उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किए. माई इंक्लिंग इज कि दे थॉट बाय डूइंग दिस दे वुड अचीव टू टारगेट्स. वन इज हिटिंग द अमेरिकन्स. American lives are lost. There's a more pressure on Trump regime, but more so that they would awaken the people of the Gulf against their regimes. So it would be kind of an Arab Spring that they will generate through these missiles. कि उनको जाग आए कि ये जो हमारे रहनुमा हैं ये तो बिके हुए हैं, ये तो इज़राइल की झोली में है, ये तो अमेरिका की झोली में है, हम अपनी खुदार कौमें जो हैं वो खड़ी हो जाएं. और मेरे ख्याल में इस स्ट्रैटेजी से इन्होंने अभी ये किया है. But it seems that just as the Americans miscalculated the reaction in Iran on killing of Imam Khamenei, कि वो लोगों को, और आप देखें नेतन्याहू is addressing the people of Iran,
Trump is addressing the people of Iran कि तुम खड़े हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे fleets खड़े हैं. Basically, neither the Americans nor the Israelis want their feet on the ground. They hope that by inciting the people of Iran will become their boots on the ground. They don't understand the Iranian character. कि mo ironi hastim. They will never take dictate from outside. Whatever issues they have, they'll fight it out within, but they will not follow dictates from outside. अब वो रज़ा शाह पहलवी के जो हैं वो पहलवी डायनेस्टी को रिवाइव करना चाह रहे हैं, पर आप देखें कि उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं they were very indifferent and very dispassionate towards the deaths that are taking place in Iran. So it has created resentment. कि ये अमेरिका के उस पे पल पल के आया है, इसको ईरानी अवाम का गम नहीं है, हमारा खून बहता है, वो कहते अच्छा बह जाए. This is what the prince said. So it created resentment. But there is social media, there is a certain population which is disgruntled mainly because of economic sufferings, the sanctions, and while realizing that the sanctions have come from the Americans, they still believe जो Iranian diaspora abroad है, उसका भी इसमें बहुत रोल है कि वो जो आपको reactions on the street नज़र आ रहे हैं, but that is not main Iran.